Hello and welcome all of you to our show FYI for your investments. Today I have with me CA Vivek Shah. Vivek is not only a very good friend of mine but also a very well-known chartered accountant. He's specialized in information systems audit and forensic audits. Vivek had worked at Deloitte and now has a range of clients in the public sector companies as well as many companies which are listed on the stock exchange. His clients, range from infrastructure companies, gem and jewelry companies, investment banking companies. Vivek has been a keynote speaker and has addressed businessmen, professionals, students, CBI officers, bureaucrats, and ministries of government about taxation. He's also selected as an international speaker by the ICAI for UAE VAT. Vivek, I'm very excited to have a conversation today with you on a very, very exciting as well as important topic, which is hacks to file taxes for traders and investors. Investing and trading, Vivek, is a full-time job in itself, right? It requires so much time and effort to be right, make money. The question is, as a trader and an investor, taxes are the toughest part. I think trading is simpler than managing taxes. So let's get on to talking and understanding, as an investor, as a trader, when we talk about tax filing, the season is right there. 31st is our due date. Tell us about a few misconceptions that people have when we talk about tax filing. Sure. Firstly, thank you very much for having me on your show, Nainesh. Uh, I really appreciate the way Fisdom is spreading financial literacy across the country and to all your viewers across the world. I must appreciate this because managing money is something which everyone has to do, whether you're a doctor, lawyer, chartered accountant, businessman, or a trader. Your money will only grow if you invest your money, and your show, which is for your investments, is a special show which is spreading financial literacy. So I must appreciate the efforts that you have put in creating a talk show like this, and Fisdom for promoting a talk show like this. Having said that, as far as certain myths about filing income tax returns are concerned, the first and foremost I would like to talk about is a lot of people think that if my income is below 2.5 lakh rupees, I should not file my tax return. This is the biggest myth which a lot of people have. Even if your income is below your taxable limit, the minimum taxable limit, you should still file your return, because that will help you in creating a particular history of tax returns filed, which will increase your credibility and which will increase your financial well-being. So सबसे पहले मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे भी है या 5 लाख से भी नीचे है, तो आप सभी को आपका रिटर्न फाइल करना चाहिए. So, Vivek, thanks for that. So that means that whatever your income is, if you're even below the 2.5 lakh mark, you should be filing returns to be compliant and have some history of filing taxes. Right. Uh, okay, so how does a common man know this? Like, how does a common man act when it comes to earning money? Let's say, someone who has a income of, let's say, about 15,000 a month, which turns to 1,80,000. For him, why is it important to file tax? Correct. So as I said, it is more about financial discipline rather than it being a regulatory requirement. Apart from that, even if a person is just earning, say, let's say only 15,000 a month and doesn't have any other source of income, or maybe little bit here and there of SIPs, you must still file your return. It is online. आप खुद भी कर सकते हो. Of course, if you go to a professional, there are benefits that you will get after taking the professional advice. But यदि अगर आप किसी के पास नहीं भी जाते तो आप खुद भी कर सकते हो. The first point and the first step is to become compliant. Once you become compliant, that is just the beginning of the journey. So my emphasis is always whether you think your income is taxable or not, you should file your returns. Second, if you have taxable income, let's say your income is above 2.5 lakh rupees or above 5 lakh rupees, you must file your return. There is a lot of ignorance. People think that in a lot of cases there is TDS which is already deducted from salary. So people think if there is TDS, I don't have to file my return. That is another big misconception which people have. TDS does not mean that your liability to file taxes has gone. You still have to file your tax return. And for all you know, if you
if you have done your tax planning in an appropriate manner, you will also get that as a refund. So it is not just about financial discipline. In some cases, you will actually get a refund of your money, which is deducted as taxes as well. Hence, I advise everyone to please file their returns and please seek professional help. That will only help you. So thank you. This is a learning for us. And, if you have income and TDS is being deducted from your source of income, you have to ensure that you file your taxes so that if you're liable to get the TDS refund, that happens only after you file your return. So that's why it's very, very important to come out and file your returns. Let's talk about the taxes that investors and traders face. So we are Fisdom is a well-tech platform. We have products from mutual fund to equities to derivatives. For our users, for our clients, for people in the stock markets, it's very, very important for them to understand taxation on each of these products. So Vivek, let me ask you, and you enlighten the people watching the show. What are the kind of taxes that these people who are investing go through? So let's start with each product. Let me start off with equity. Now, if I'm an investor, if I've bought equity shares, okay, so if I've purchased, let's say, a share of, a company, and I've sold it within, let's say, a month, or sold it maybe after a year, how does the taxation work? How should I calculate my tax, and when should I be showing the government or filing my returns for it? Correct. So, as far as shares and mutual funds are concerned, or securities are concerned, they are categorized into two parts. First is short-term capital gains, and second is long-term capital gains. The taxation effect in both short-term and long-term differs whether they are debt instruments or whether they're equity instruments. So, when we talk about short-term capital gains, and when we talk about equity instruments, which are like equity shares that we normally trade either through your platform or through other services that people use, in such cases, your taxation is will be determined if you have held only for if you have held for a period of less than 12 months, then it will be categorized as short-term capital gains. And in short-term capital gains, as of now, there is a tax of 15% plus surcharge plus cess. So surcharge and cess will remain common in all the rates. Depending on whatever category you fall in, your surcharge and cess is going to be applicable. So as far as short-term capital gains or equity schemes or equity mutual funds or equity shares are concerned, it is 15% as of now. Apart from that, in case if you have held debt mutual funds or anything which is other than equity oriented mutual funds, in that case, the definition for short term or long term is determined when you hold for 36 months. So when it is equity oriented, it is 12 months. When it is debt oriented or other than equity oriented, it is 36 months. So if you have held any debt mutual funds or any debt products or debt securities for a period of less than 36 months, then in that case, it will again be treated as short term capital gains only. In such cases, the tax will be 30% plus surcharge plus cess. So this is the case as far as short term capital gains are concerned. Now moving on to long term capital gains. For long term capital gains, the rate is 10% without indexation. If you are for equity oriented schemes or for equity shares. Now when we talk about other than equity, when we talk about debt oriented mutual funds or when we talk about debt securities, in that case you have two options, whether it is listed or whether it is unlisted. If it is listed, then it is 20% tax with the benefit of indexation. If it is not listed, then it is 20% tax with surcharge and 20% with indexation along with surcharge and applicable cess. So this is the tax structure which an investor or a trader would generally fall in. Sure. So let me ask you here. Equities, 12 months is the bracket to decide whether you fall into the long term bracket or short term. Correct. Debt, when we talk about debt is basically 36 months to decide whether you fall in long term or short term. Yes. The next question is, when we talk about long term gains, okay, equities recently or in the past few years, we've got the taxation. Previously, equities were not taxed in the long term. My question to you is, what do you think instruments like equities, which are not
very common amongst everyone. Almost 5% of our country invests in equities. We have a long way to go. Do you think it was the right idea to bring taxation in long term for equity holders? Correct. When we talk about the percentage of people having exposure in equities, as you rightly said, it is only 5%. But now compare that with only 6 crore returns being filed in the country. So out of a population of 136 crores, there are only 6 crore people who have filed returns in the last year, and there are only 5 crore people who are having demat accounts and are investing in equities. So India is still a maturing market; it is still growing. So I think in such cases, probably if taxation was not introduced on long term, it would have inculcated a habit of holding shares for a longer period. It possibly could have, but as far as taxation is concerned, I think we can only interpret taxation. But if we were to go behind the logic for this, is that there were certain elements which are found in the securities market which were manipulating prices of certain penny stocks, and they used to increase they would manipulate in such a manner that the price of rupees 2 rupees per share went up to 2000 rupees, and after 366 days they would sell it and book the entire profit as long term capital gains and not pay taxes. So, from a government's perspective, there was a huge revenue loss, and that is why the government introduced that there would be some amount of long-term capital gain also. But as I said, that just because of certain activities of certain antisocial elements who use this financial engineering techniques to avoid taxes, I think the larger investor community has to pay the price for that. Yeah, I mean, I agree. For the investing community, it's definitely a deterrent to now pay a long-term tax on equities as well. Let's talk about dividends. Vivek, as an equity shareholder, I receive dividends. Correct. Please tell us about how these dividends are taxed and how should Correct. one record it while filing returns? See, first and foremost, as far as dividend is concerned, for resident individuals, there's a different rule, and for non residents, there is a separate rule. As far as dividends are concerned, as of now, your dividend will get taxed in the slab rate in which you fall. Earlier, अगर आप सबको याद हो तो सबसे पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हुआ करता था, जहां पे कंपनी डिविडेंड टैक्स भरती थी और इंडिविजुअल्स के लिए एग्जेम्प्ट हुआ करता था. सो व्हेन देयर वाज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इट वाज टैक्स एट द लेवल ऑफ द कंपनी व्हेन दे यूज्ड टू डिक्लेयर द डिविडेंड. लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि जहां पे कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं भरती है, और आपके बुक्स में जब वो इनकम आती है तब आप उस पर टैक्स भरते हो. सो अगर आप 10% की कैटेगरी में आओगे तो आप 10% आपको टैक्स लगेगा. 20% के स्लैब रेट में आओगे तो आपको 20% लगेगा. 30% के स्लैब रेट में आओगे तो 30% लगेगा. और अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ के भी ऊपर है तो आपको सुपर सरचार्ज भी लगेगा. सो उस तरह से आप बेस्ड ऑन द टैक्स स्लैब यू विल नाउ हैव टू पे डिविडेंड. As far as TDS is concerned, if the total dividend that you are receiving exceeds 5,000, in that case, there is TDS as well. There is a 10% TDS as we speak. Got it. So is this 5,000 on a portfolio level or a company level? It's on company level. Okay, got it. So I think that takes care of what equity taxation looks like, right? Long term, short Yes. term, plus your dividends that you receive. Let's go on to understanding futures and options. अभी futures and options जो है हमारे हमारे बहुत सारे clients futures and options FNO जिसे बोलते हैं उसमें ट्रेडिंग करते हैं. उसमें आप options या futures जो भी ट्रेड करते हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जनरली बड़े अमाउंट्स के होते हैं. अभी एज एन इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर हमें समझना है कि एफएनओ पे टैक्सेशन कैसे होता है. तो अगर आप फ्यूचर्स के एक पोजीशन लेते हो, समझो आपने एक निफ्टी का लॉट ले लिया या बैंक निफ्टी का लॉट ले लिया और उस पे समझो 5,000 प्रॉफिट लॉस किया, तो आपको टैक्सेशन किस हिसाब से लगता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में? सबसे पहले एफएनओ की जो इनकम है उसको आप अलग तरीके से कैटेगराइज करते हो. वो आपकी बिजनेस इनकम होती है, वो कैपिटल गेन्स नहीं होते. सो कैपिटल गेन्स में जो रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स है उसका बेनिफिट आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नहीं ले सकते हो.
दूसरी बात यह है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो भी आप, क्योंकि वो आपकी बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट द इनकम। तो वो एक आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। जो एफएनओ ट्रेडर्स होते हैं उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस बाबत में मिलता है। दूसरी चीज आपको ये कहना चाहता हूँ कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो आपको ऑडिट भी एप्लीकेबल हो जाती है। ऑडिट एप्लीकेबिलिटी के लिए बहुत अलग अलग तरीके से उसकी कैलकुलेशन होती है। हर एक ट्रेड में आपका जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस है उसको आपको अक्यूमुलेट करना है एब्सोल्यूट वैल्यू को। मतलब अगर आपका 10,000 का प्रॉफिट है और 10,000 का लॉस है तो आपका टोटल टर्नओवर का कैलकुलेशन 20,000 होगा। उस तरह से आप हर एक ट्रेड का अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे और उसका प्रॉफिट या तो लॉस एब्सोल्यूट वैल्यू में, मतलब लॉस को आपको नेगेटिव सेट ऑफ नहीं करना है, आपको एब्सोल्यूट फिगर को कैलकुलेट करना है। 10,000 लॉस, 10,000 प्रॉफिट, योर टर्नओवर विल बी काउंटेड एज 20,000। एब्सोल्यूट फिगर्स में अगर आप ऑडिट की थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हो तो आपको ऑडिट भी करवाना है। ये चीज शायद कई लोगों को शायद नहीं पता होती है, तो मैंने सोचा कि आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को बता दूं। So check for applicability of audit and also check for deduction of business expenses। आपके बिजनेस रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो आप अगर एफएनओ ट्रेडर हो तो आप उन सारे एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो आप उस चीज का बेनिफिट लीगल तरीके से भी आप वो बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने एक एज अ ट्रेडर आपने एक ऑफिस लिए तो ऑफिस का रेंट हो गया, उसकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपके टेलीफोन बिल्स आ गए, इंटरनेट बिल्स आ गए, वो सारे एक्सपेंसेस आप ले सकते हो। कई लोगों ने ऑफिस का इंश्योरेंस भी लिया होता है तो वो भी आप एज अ बिजनेस डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। So thank you, Vivek. This was very, very detailed, and this is important to know कि अगर आप F&O trader हो तो आपका जो profits और losses है उनको add करके आपको देखना है कि आपकी audit applicability है कि नहीं। हमारे पास ऑडियंस में एक क्वेश्चन है एंड आई विल टेक द क्वेश्चन एट दिस लेवल क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं। कैन वी सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम एफएनओ एंड इक्विटी अगेंस्ट अदर इनकम सच एज सैलरी इनकम? No, we cannot set it off. As far as set off is concerned, profits of FNO can be set off against losses of FNO only. So you will not be able to set it off against house rent property, rental incomes, which is called as income from house properties or income from salaries, or for that matter, even income from capital gains. Okay, so that is an answer for you. You cannot set off your F&O losses against even equities, and nor can you set it off against salaries or house properties. So, Vivek, thank you for that answer. Let's go to the next question. I want to talk about IPOs. Okay, IPOs से माध्यम से जब एक शेयर हमारे एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, समझो मैंने एक IPO एप्लीकेशन किया है और मुझे वो शेयर्स डीमैट में मिले, और वो शेयर्स अगर मैंने समझो लिस्टिंग के दिन पे बेच दिए, ना व्हाट विल बी दिस बी काउंटेड एज, और उसको उसका टैक्सेशन कैसे रहेगा? अगर आपने आईपीओ में शेयर्स खरीदे हैं, आपको अलॉट हुए हैं, तो और जब आप उसको बेचते हो लिस्टिंग के डे पे, सो लिस्टिंग डे पे जब आप उसको बेचोगे वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही कैलकुलेट किया जाएगा। क्योंकि आपने जब आपको आईपीओ में इक्विटी शेयर्स अलॉट हुए हैं और बेचते समय आपने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे एसटीटी कहते हैं, वो आपने भरा है, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का जो रेट है वही एप्लीकेबल होगा, which is 15% as we speak. Got it. So I think equities and IPOs is taken care of. Let's go to ETFs, exchange traded funds. अभी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कभी करान बाइंग और सेलिंग करते हैं। समझो वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अगर हमने शॉर्ट टर्म या विद इन 365 डेज बेचा होता है, तो इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ट्रीटेड इन द सेम मैनर एज इक्विटी शेयर्स या उनका टैक्स ट्रीटमेंट सेपरेट होता है? नहीं, उनका टैक्स ट्रीटमेंट सेपरेट होता है। मैं आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी एक या दो उदाहरण देना चाहता हूँ। गोल्ड के ईटीएफ होते हैं, सिल्वर के ईटीएफ होते हैं, जो लिस्टेड होते हैं, एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होते हैं, बट वो इक्विटी नहीं होते हैं। सो गोल्ड और सिल्वर के जो ईटीएफ काफी प्रोमिनेंट ईटीएफ है आज की तारीख में मार्केट में, सो उनपे आपको अदर देन इक्विटी का जो टैक्स स्लैब है वो आपको लागू पड़ जाता है। So that tax slab for short term will again be the period will be counted as 36 months. उसमें आपका जो कैपिटल गेन्स का जो थ्रेशोल्ड पीरियड है वो
1 साल नहीं है, 12 महीना नहीं है, वो इसमें 36 महीने है या 3 साल है। सो वो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो चीज एक ध्यान रखनी होगी। और दूसरी चीज है कि टैक्स रेट भी अलग रहता है, क्योंकि ये इक्विटी फंड्स नहीं होते हैं और ये अदर देन इक्विटी की कैटेगरी में आते हैं, तो आपका टैक्स रेट भी चेंज हो जाएगा। एंड शॉर्ट टर्म के लिए आपको वही जो 30% है वो 30% लगेगा, और लॉन्ग टर्म में इट विल बी 20% विद द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। Got it. So again, Vivek, if an ETF is an index ETF, जिसका करेक्ट। backing is equity, तो क्या हम वो as a equity share treat कर सकते हैं? हाँ, सो अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड है, इक्विटी ओरिएंटेड की परिभाषा ऐसी है कि 65% और मोर इज इन इक्विटी। तो अगर इक्विटी ओरिएंटेड है तो आपको वापस इक्विटी के ही रेट लगेंगे। मैंने आपको जो उदाहरण दिए वो स्पेसिफिकली गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स का मैंने बताया, क्योंकि काफी लोग, आपके काफी यूजर्स गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में ट्रेड करते होंगे, उसके लिए मैंने उसका एक स्पेसिफिक उदाहरण दिया था। Got it. Vivek, I'm going to take a question from Aryan. Aryan has put out a question and he's saying, I have worked when I was 18. I got a salary for some months and I had a small startup. So a lump sum amount is coming in and going from his account, so should he file his ITR? And if he does, what should be the tax benefit that he gets? So my follow-up question over here is that what is the amount of that lump sum that you're going to get? So if you started a startup and you've got a small salary, it should still be filed. So the emphasis over here is on financial discipline. There is no benefit that you're going to get by filing, but the benefit is that you are creating a track record for yourself. In future, whenever you want to travel, generally most of the embassies will ask you for 3 years of ITRs. Now, if you don't have that, it will not help you. So filing is always beneficial. नॉट ओनली दैट, यदि अगर आपको क्रेडिट कार्ड भी लेना है तो सबसे पहली चीज वो मांगेंगे आपके पास पिछले 3 साल के आईटीआर। तो अगर आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया होगा तो आपको वो बेनिफिट मिल ही नहीं सकता। सो अगर आपको जो लमसम अमाउंट भी मिल रहा है स्टार्टअप में, वो लमसम अमाउंट भले 2.5 लाख के नीचे हो तो भी मेरे हिसाब से आपको आपका रिटर्न फाइल करना चाहिए आर्यन। Okay, so Aryan, I think that makes it clear. Vivek has given us the answer that ideally, as a discipline, you should start filing your returns. It will help you from a futuristic point of view. Thanks, Vivek, for the quick answer. Let me go to our next product, which I really want to ask you and understand the taxability. Unlisted shares. Vivek, tell us, unlisted shares की taxation कैसे होती है? और अगर मैंने एक अनलिस्टेड शेयर्स की बाइंग और सेलिंग की मार्केट्स में, जब लिस्ट होते ही मार्केट्स में, तो उसका टैक्सेबिलिटी कैसे होता है? डज इट चेंज और डज इट स्टिल रिमेन एन अनलिस्टेड सिक्योरिटी एंड कैटेगराइज्ड एज वन? Correct. So this is a very good question that you asked. A lot of people are investing in unlisted shares as well. काफी बड़ी कंपनीज के अनलिस्टेड शेयर्स मार्केट में कोट, नॉट मार्केट में, ऑफ मार्केट कोट होते हैं और कई लोग उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। काफी बड़े टेक जायंट्स आज की तारीख में, जो आज की तारीख में लिस्टेड नहीं है, वो अनलिस्टेड मार्केट्स में आपको उनके शेयर्स मिल जाते हैं। सो एज फार एज द अनलिस्टेड शेयर्स आर कंसर्न, when you buy them, there is anyways no tax to be paid, so they are unlisted but they are still equity. When they get listed, what happens is that बेचते समय जब वो आप उसको बेचोगे, सबसे पहले तो अगर आप एक एंकर इन्वेस्टर हो तो पहले 6 महीने के लिए तो आप बेच नहीं सकते उन शेयर्स को, लेकिन जब आप बेचते हो, मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं, उनका आईपीओ आ जाता है, जैसे कि एक आप उदाहरण ले लीजिए, पेटीएम है या जोमेटो है, उनका जब आईपीओ आ जाता है तो आईपीओ जब तक एंकर इन्वेस्टर्स का एक लॉक इन पीरियड रहता है तब तक आप उसको बेच नहीं सकते। वो लॉक इन पीरियड खत्म होते ही आप उसको बेच सकते हो, और बेचते वक्त आप उस पे एसटीटी पे करोगे, विच इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सो आपको जो एसटीटी, जो इक्विटी शेयर्स पे जो आपको रेट लागू पड़ता है, वही रेट आपको अनलिस्टेड शेयर्स के बेचने पे भी वही सेम रेट लागू पड़ेगा। Got it. So, unlisted shares have now of late become a favorite for a lot of people to invest in companies even before the IPO gets launched. Now, let me take a Correct. very, very important question in the markets. Okay, so today's markets are not limited to equity, debt, and the mutual fund products that we discussed. Vivek, you've been on the board of a lot of crypto exchanges and cryptos to talk about taxation. You've actually anchored a lot of talks on cryptos even
in the CA Institute. Let me go to the question straight away. And we have one question as well. First, Yes. let's talk about cryptos as an asset class. So, one, what is your view on cryptos? Two, let's talk about taxation on cryptos. So, though I understand that government has not regularized cryptos, there's no regulation per se, but there is a taxation on it. So, let's talk about this. Vivek, tell us first, what do you think about cryptos? Second, Yes. what is the taxation? First and foremost, as far as cryptos are concerned, whether I consider them as an asset class or not, I will tell what the governor of RBI thinks. So the RBI governor in the first week of July released a statement where he said that none of the cryptos are asset backed and they're pure speculation. So I think if such a large personality has not categorized it as a separate asset class, I don't think I am in a position to comment on this matter. सो आई थिंक जो वैसे तो कहा जाता है कि समझदार को इशारा ही काफी होता है, तो अगर आरबीआई गवर्नर इतना बड़ा स्टेटमेंट ओपनली पब्लिक में कहते हैं तो आई थिंक समझदार को इशारा काफी होना चाहिए, और मैं मानता हूं कि आपके सभी दर्शक काफी समझदार हैं यहाँ पे. सो फर्स्टली दे आर नॉट एसेट बैक्ड, सेकेंडली दे आर नॉट रेगुलेटेड. तो एसेट बैकिंग ना, जैसे कि इक्विटी शेयर्स में कुछ तो एसेट बैकिंग है. हर एक शेयर के पीछे कुछ अंडरलाइंग वैल्यू है, कुछ अंडरलाइंग एसेट है, कुछ बुक वैल्यू है, कुछ मार्केट वैल्यू है, और उसको सेबी, आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बहुत सारी एजेंसीज उस शेयर्स को रेगुलेट कर सकती है और कर रही है. जब हम क्रिप्टोस की बात करते हैं तो आज की तारीख में किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ना ही सेबी, ना ही आरबीआई, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको रेगुलेट कर रही है. सो और एक चीज ये है कि आज की तारीख में जब हम करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि स्टेबल है, दूसरी जो कि सॉवरेन है, मतलब कोई देश उसको रेगुलेट करे. तीसरी चीज ऐसी है कि करेंसी अगर आप कहते हो तो उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, एक अंडरलाइन वैल्यू होनी चाहिए. अब हम कंपेयर करते हैं उसी चीज को क्रिप्टो करेंसी के साथ. क्रिप्टो करेंसी स्टेबल नहीं है, सो इट इज नीदर स्टेबल नॉर इज इट सॉवरेन. मतलब कोई देश उसको इशू नहीं कर रहा है, कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक कंपनी या कोई एक प्राइवेट ग्रुप उसको इशू कर रहा है. आज की तारीख में हम इंडियन करेंसी की बात करें तो आरबीआई उसको रेगुलेट करता है, आरबीआई उसको इशू करता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट प्रिंट योर करेंसी, इट इज द सेंट्रल बैंक विच प्रिंट्स योर करेंसी. सो वो पावर जो सॉवरेन पावर होता है, क्या वो इंडिविजुअल्स के हाथ में आना चाहिए या नहीं, ये मैं एक सवाल आपके सारे व्यूअर्स को पूछना चाहता हूं. तीसरी चीज है कि वो स्टेबल नहीं है. तो आज अगर आप 2,000 रुपए की नोट लेके रात को सो जाते हो और कल सुबह जब आप उठोगे तो वो 2,000 की नोट की वैल्यू 2,000 रुपया ही है. क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है. आज अगर आपके पास एक बिटकॉइन है और कल आप सुबह उठोगे तो उसकी वैल्यू, आज अगर $20,000 की वैल्यू है, कल सुबह उठोगे 21,000 भी हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है. सो इट इज हाईली स्पेक्यूलेटिव इन नेचर. सो माई सजेशन टू एवरीवन इज that if you don't understand this market of cryptocurrencies, you should not get into it. And as far as small traders and investors are concerned, my suggestion would be that mutual fund सही है, equity सही है, market सही है, क्योंकि वो regulated है. Not that AMFI has paid me to say this, but mutual fund सच में सही है. Got it. Let's talk about taxation. Yes. Vivek, what do you think, or how does the taxation with cryptos work? And in specific, a question: can short-term losses on cryptos be set off against short-term gains against equities? Very good question. As far as taxation is concerned, the government has only decided to tax profits from cryptos. नाउ ये सवाल जैसे ही गवर्नमेंट ने क्रिप्टोस पे टैक्सेशन के बारे में बात की, काफी लोगों को लगा कि क्रिप्टोस लीगल हो गए हैं. तो क्रिप्टोस लीगल नहीं हो, उस पे सिर्फ टैक्स आया है. आप वेदर क्रिप्टो करेंसी लीगल है इलीगल है वो तो गवर्नमेंट ही डिसाइड कर पाएगी जब एक कानून उस पे लागू होगा. टैक्सेशन में ऐसा है कि आज की तारीख में आपको आपके क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस पे जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उस पे आपको 30% फ्लैट टैक्स भरना है. अब ये 30% कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं. आपने आज सुबह एक बिटकॉइन खरीदा और रात को बेच दिया, आपने 10,000 रुपए का प्रॉफिट किया. कल आपने वही एक बिटकॉइन खरीदा और वो बिटकॉइन वापस नेक्स्ट डे आपने बेच दिया
और उसमें आपने 10,000 रुपए का लॉस किया। सो एक ट्रेडर या एक इन्वेस्टर या एक स्पेक्यूलेटर किस तरह से इसको देखेगा? 10,000 प्रॉफिट वर्सेस 10,000 लॉस, मेरे जेब में एक भी रुपया आया नहीं, लेकिन आपको गवर्नमेंट को 30% जो प्रॉफिट है उसका 30% आपको टैक्स कंपल्सरीली भरना है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने 10,000 रुपया कमाया, 10,000 घुमाया, लेकिन आपके जेब में एक रुपया बचा नहीं, लेकिन आपको 3,000 रुपए गवर्नमेंट को उस पर टैक्स भरना है, क्योंकि लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ। जिस तरह से इक्विटीज में आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन आप क्रिप्टो करेंसी को के प्रॉफिट्स को क्रिप्टो करेंसी के लॉसेस के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। आपको फ्लैट 30% भरना है। कई लोगों ने कहा कि ये चीज फेयर नहीं है, मैं भी मानता हूं कि शायद ये चीज फेयर नहीं है, लेकिन कानून के सामने फेयरनेस की बात तो फिलहाल नहीं आएगी। कानून कहता है, इनकम टैक्स एक्ट के तहत आज की तारीख में आपको 30% टैक्स भरना है। यदि आपके जेब में पैसा नहीं भी बचा एंड ऑफ द ईयर पे, फिर भी आपको 30% टैक्स भरना होगा। और रहा सवाल सेट ऑफ का, क्या क्रिप्टो करेंसी के लॉसेस या प्रॉफिट्स को आप इक्विटीज और म्यूचुअल फंड के लॉसेस या प्रॉफिट्स के सामने सेट ऑफ कर सकते हो? तो उसका जवाब स्पष्ट ना है। इट इज अ क्लियर नो, यू कैन नॉट सेट ऑफ योर क्रिप्टो लॉसेस अगेंस्ट इक्विटी प्रॉफिट्स, nor can you set off your equity losses against your crypto profits. So, Vivek, what I understand is there is Yes. no set off with the other assets. Plus, Yes. You have to pay tax on the incomes and no Yes. set off of losses even in cryptos. Correct. So So, I will further clarify over here. It is not only no set off, no deduction of any expenditure incurred. जैसे कि अगर आप कोई भी क्रिप्टो के जो ये सो कॉल्ड एक्सचेंजेस होते हैं, मैं ये सो कॉल्ड और सेल्फ अज्यूम्ड एक्सचेंजेस उनको इसलिए कहता हूं क्योंकि सेबी ने उनको कोई रजिस्ट्रेशन दिया नहीं है। वो अपने आप को खुद ही एक्सचेंज कहते हैं। ना ही सेबी, ना ही आरबीआई, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उनको एक्सचेंज का दर्जा दिया है। आप जितनी भी बड़ी बड़ी फुल पेज एडवर्टाइजमेंट देखते हो न्यूज़पेपर में, या जितनी एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो टीवी पे, तो किसी ने उनको एक्सचेंज कहने का हक दिया नहीं, वो अपने आप को एक्सचेंज कहते हैं। तो मैं कहता हूं सो कॉल्ड सेल्फ अज्यूम्ड एंड सेल्फ रेगुलेटेड एक्सचेंजेस। So the commission that these so-called self-assumed and self-regulated exchanges charge you, that cannot be set off as an expenditure for deduction of your profits. Second point, आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते और आप उसका सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। अगर आपके इक्विटीज में या डेट म्यूचुअल फंड में, मार्केट्स में अगर आपके प्रॉफिट या लॉस होते हैं, तो लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फ्यूचर में जब भी आपका प्रॉफिट होगा, आप उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। उसके भी अलग प्रावधान है, उसके अलग प्रोविजंस है। क्रिप्टो करेंसी में वो चीज मुमकिन नहीं है। So you cannot even take expenses and you cannot carry forward your losses. No. Okay. Nor can you set off. So this is very important for all these crypto traders out there to know that whenever you're buying cryptos, the profit that you're making, you're going to get taxed on that. However, the losses that you book, those losses cannot be set off or cannot be carried forward. Right. So thank you so much, Vivek, for this answer. And this is something I think which will be new to all our viewers out here. Sorry, you were saying something. Yeah, so I was saying, in a lighter manner, I call this as nationalization of profits and privatization of losses. जो भी प्रॉफिट हुआ उस पे गवर्नमेंट आपसे 30% टैक्स लेगी, लेकिन जो भी लॉस हुआ वो आपको खुद अकेले लेना है। Yeah, I think that's the right term that you used. Let me actually go on to the next question. I think you've given us a good understanding of the difference between cryptos and equities. So, as an asset class, if someone to, we see a lot of youngsters these days who are very, very interested in putting their money in cryptos, okay, not equities. What would your advice to them be? Sure. First and foremost, this does not constitute as investment or legal advice. But if a person still wants to invest money in cryptos, my suggestion is that put only that much that you can afford to lose. So if you can afford to lose 10,000, put only 10,000. If you can afford to lose a lakh, put a lakh. To each his own. मतलब आप में जितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उस हिसाब से ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा। बट अगर एक थंब रूल अगर कोई पूछे, तो मैं उनको यही कहूंगा कि आपकी जितनी भी टोटल नेटवर्थ है
उसका 1 से 2% मतलब 1 to 2%, if you want to try in a different asset class which is highly speculative, you can try in cryptocurrencies. But apart from that, always take advice from your financial planner and or from a wealth advisor, and seek professional advice, and then only invest. Got it. I'm going to take one question here, and a very interesting question that we've got here. We have someone who says, what kind of penalty applies to salaried individuals if I miss the ITR filing deadline? So, Vivek, can you help us with this? अगर आप आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन मिस कर लेते हो तो आपको, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, तो आपको 1,000 रुपीज की पेनल्टी लगती है अप टू 31 दिसंबर. समझो 31 जुलाई ड्यू डेट है. अनलेस देयर इज एन एक्सटेंशन, इट इज ऑलवेज 31 जुलाई. बट पिछले 10 सालों में से 8 साल में तो एक्सटेंशन आया है, चाहे वो 1 दिन का हो, 1 महीने का हो, या 3 महीने का हो. बट अदरवाइज आपकी ड्यू डेट हमेशा 31 जुलाई ही रहेगी. तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले 31 जुलाई के पहले रिटर्न फाइल करने की कोशिश कीजिए. यदि अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी, जो कि है 1,000 रुपया. और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है. Okay, so Shivani, that was an answer for you. अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 1,000 रुपए की पेनल्टी लगेंगी. If more than that, it could go up to 5,000. One interesting question, Vivek. Normally, we get this question even as brokers. I have some shares which my father bought many years ago. If I sell these shares right now, I don't know the exact amount of profit. How do I calculate my tax liability? Vivek, can you help us understand what is the tax liability for people who have shares, from the ancestral times, and we don't really know cost? Correct. So when you're talking about ancestral inheritance, अगर आपके फैमिली से आपको ये शेयर्स मिले हैं जो आपने नहीं खरीदे हैं और काफी पुराने हैं, तो अगर अच्छे शेयर्स होंगे तो उसकी वैल्यू काफी क्वाइट ऑब्वियसली काफी हाई होगी. सो इन सच केसेस व्हाट यू हैव टू डू इज you have to calculate what is the fair value of the shares as on 31st Jan 2018. वो एक ग्रैंडफादरिंग क्लॉज है जहां पे आपको, यदि आपकी कोई भी कॉस्ट हो, आप कैलकुलेट कीजिए 31 Jan 2018 को उसकी क्या वैल्यू थी. वो आपको रेट ऑनलाइन मिल सकता है. 31 Jan 2018 will now be your assumed cost. एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट कि यदि अगर आप आज उसको बेचते हो तो उसमें आपका कितना गेन हो रहा है. सो आप सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए 31 Jan 2018 पे उसकी क्या क्लोजिंग वैल्यू थी. ऑनलाइन आपको काफी इजीली मिल जाएगा. और उसके बाद आप आज के रेट से कंपेयर कीजिए और फिर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए. और क्योंकि ये आपके काफी पुराने शेयर्स है तो डेफिनेटली आपको इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ही एप्लीकेबल होंगे. उस हिसाब से आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी. So, Ashneet, this was an answer for you. I'm hoping you have one of those MRF stories to tell us from the shares that your father had bought, and and you'd sell now. Let's get into the next best thing. Vivek, tell us, as traders, investors, we make money in the market. Okay, paisa ban jata hai. When we have years like 2019, when we have years like 2017. When markets are doing amazingly well, we make our money. The next thing is, how do we save tax? The biggest question. And the reason why we all come to CS. Tell us, as traders and investors, how can we all save tax? Correct. As far as saving taxes is concerned, क्योंकि आपके काफी दर्शक यहाँ पे जो है और आपके काफी जो क्लाइंट्स भी होंगे जो आपका पोर्टल यूज कर रहे हैं, वो रेगुलरली ट्रेडिंग करते होंगे. मैं ऐसा मान रहा हूँ वो लोग रेगुलरली ट्रेडिंग करते होंगे. सो यू कैन ऑलवेज यूज अ टेक्निक कॉल्ड एज टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग. दैट मीन्स कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपने कुछ प्रॉफिट कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स है या कुछ ऐसे ट्रेड्स है जहां पे आप शायद अभी फिलहाल अटक गए हो. सो वो शेयर्स आप फाइनेंशियल ईयर खत्म हो उसके पहले यदि अगर आप बेच देते हो और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वापस खरीद लेते हो, तो आपको वो एक टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का एक बेनिफिट लीगली आप ले सकते हो. एंड इट इज वेल विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ. सो वो एक आप चीज कर सकते हो. दूसरी चीज है कि टैक्स बचाने के लिए आपके जो क्लाइंट्स है ELSS म्यूचुअल फंड्स में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं.
जहां पे आपको 80C सेक्शन 80C के तहत आपको एक डिडक्शन मिलेगा, तो आप डेफिनेटली आपका एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और साथ में आपको एक टैक्स डिडक्शन भी मिल जाएगा। सो वो एक चीज आप कर सकते हो। और दूसरा मैंने जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग था वो भी आप ले सकते हो। सो उस हिसाब से आप आपके टैक्सेस को प्लान कर सकते हो। और एक चीज है कि आप इक्विटी शेयर्स, जब इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर 10 महीने 11 महीने तक अगर आपने होल्ड कर लिया है, तो आप देख लीजिए कि शायद आप अगर लॉन्ग टर्म के कैटेगरी में आते हो या नहीं आते हो, तो उस हिसाब से भी आप आपके टैक्सेस को प्लान कर सकते हो। Sure. और So, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे, और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आपका आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी आती है एज अ ट्रेडर, तो आपको शायद नहीं पता कि आपको कितना एडवांस टैक्स भरना है। लेकिन यदि अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भरते तो क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यदि अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भरोगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो एक हैबिट बना दीजिए कि जब जब प्रॉफिट हो उसमें से थोड़ा पार्ट आप इनकम टैक्स के लिए साइड पे रखते जाइए और उसको भरते जाइए। साल में 4 बार एडवांस टैक्स भरने की डेट्स आती है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। तो आप एडवांस टैक्स उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा शेयर कर भरते जाइए, क्योंकि एज अ ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर आपको शायद नहीं पता होगा कि एंड ऑफ द ईयर पे आपकी पोजीशन क्या होगी। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक छोटा सा पोर्शन जो भी प्रॉफिट बुक करते हो उसमें से आप भरते जाइए ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। thank you, Vivek. So, I think what you said is really important. As a trader or an investor, it's very tough to see कि decide कि आप कितना पैसा बनाओगे और उस पे टैक्स कितना आ सकता है। एडवांस टैक्स कैलकुलेशन बहुत ही मुश्किल होता है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। पर ये आइडिया जो आपने बताया वो बहुत ही अच्छा है। आई थिंक दैट इज अ गुड सोल्यूशन। आप जब भी टैक्स प्रॉफिट बुक करो तो थोड़ा पोर्शन ऐसे रखो जो आप टैक्स में दे सको। So, on your filing dates, what you mentioned, it makes sense to put out a little bit of that profit and give it out as tax. Also, one important question here again, in turn, is we've learned how tax is saved, right? We've understood ATC investments kar sakte hai, which is one of the best tax saving come return investments. I mean, Fisdom, we are proud to be a distributor of mutual funds, and we've got some renowned banks with us. We are the well partners for renowned banks. And we've been spreading awareness on ATC, on ELSS mutual funds, and the importance of having equity plus getting tax benefits. So, according to you, Vivek, in the ATC bracket, what are the best, ways of getting returns plus saving tax amongst करेक्ट, all the investments that can be done in ATC? करेक्ट। सो एटीसी में आप काफी अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हो तो वो भी आपको सेट ऑफ मिलता है। आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका प्रीमियम भरते हो तो वो भी आपको डिडक्शन मिलता है। कई लोग पीपीएफ में पैसा डालते हैं। कई लोग स्कूल ट्यूशन फीस जो होती है उसका बेनिफिट लेते हैं एटीसी में। तो एटीसी में इस प्रकार से अंडर चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आपको काफी ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं। यदि अगर आप एनालाइज करो कि पीपीएफ में आप पैसा डालते हो तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अभी पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट्स भी काफी कम हो चुके हैं, जो पहले पिछले 2 साल या 3 साल पहले हुआ करते थे उससे काफी कम हो चुके हैं। सो पीपीएफ में भी अगर आप पैसा डालते हो तो एक अच्छी स्कीम है, लेकिन उसमें आपके रिटर्न्स फिक्स्ड ही रहेंगे और वो कम ही होने वाले, वो ज्यादा नहीं बढ़ सकते। यदि अगर आप ईएलएसएस में पैसा डालते हो, इन माय पर्सनल ओपिनियन, अगर आप ईएलएसएस में पैसा डालते हो तो आपको एक अपसाइड का बेनिफिट मिल सकता है। मार्केट्स अगर आप देखोगे 3 साल की हिस्ट्री, कभी भी पिछले 10 साल में आप देख लीजिए, अगर आप कोई भी एक रोलिंग ब्लॉक 3 साल की हिस्ट्री देखोगे तो ईएलएसएस हैज ऑलवेज आउट परफॉर्म पीपीएफ रिटर्न्स। So my suggestion is that if you have to park money and claim tax deduction of 1,50,000 rupees, ELSS mutual funds are one of the best instruments. Not that in every year it will outperform PPF, but क्योंकि ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, तो आपको 3 साल में it will definitely perform better than PPF. And always if you have a good wealth advisor or a financial planning advisor, मैं मानता हूं कि आपके रिटर्न्स पीपीएफ से ज्यादा आ सकते हैं ईटीसी के इन्वेस्टमेंट्स में। Got it.
So, Vivek, I'm getting a lot of questions here in the chat box. Before we take these questions, let me just do a small call out. So, guys, if you're liking the kind of content that we're putting out on our channel, I just request you to go out and like the video, subscribe to our channel, stay tuned to all these YouTube lives that we have with experts to get knowledge that you want on investing, on taxation, on savings, all of it. Let me take the next question that I have, and an interesting one. So we've got Vicky who's asking us, if I sell shares on 29th of March, should it still be considered in the ITR? So I think what he's trying to say is T plus 2 is the settlement. So even if it is done on 29th, will it be liable to be calculated in this year or the next one? It will be the current year, because the rule is that you should have bought or sold shares in a particular financial year. So if you have sold shares even on 31st, they will be calculated in the current financial year only. However, movement from your demat has got no correlation as far as transactions are concerned. So अगर आपने transaction punch कर लिया, आपके पास उसकी broker की contract note आ गई, आपके पास transaction summary आ गई, it will be a transaction of that particular year only. So, Vicky, I think that is a straightforward answer for you. If you even do a transaction on 31st, it still has to be calculated for this financial year. Vivek, before I open it again to everyone for questions, let me ask you the important part which all of us are waiting here. 5 must important things that are very, very critical when someone is filing returns, especially traders and investors. What do you think? Which are the 5 things that I should remember when I'm filing my returns? Correct. Yeah, sure. So as far as traders and investors are concerned, the first and most important thing for traders and investors is to ensure that you get a proper capital gains report from your broker, because that will help you, that will ease out a lot of your work, and will give you much more clarity as far as filing your returns are concerned. So सबसे पहले आप अपना कैपिटल, आपकी कैपिटल गेन्स की जो समरी है आपके ब्रोकर या ऐप पे आप जिसके भी थ्रू ट्रेड कर रहे हो उनके पास से एक बार आप मंगवा लीजिए. दूसरी चीज है कि आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को मिक्सअप मत कर दीजिए, डेट और इक्विटी को मिक्सअप मत कर दीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न जब आप भरते हो, आपने फर्स्ट कॉलम के बदले सेकंड कॉलम में फिगर डाल दिया तो उसका टैक्स इंप्लीकेशन अलग आ जाएगा. सो बी वेरी केयरफुल when you are filling short term and long term and debt and equity. So ये जो चारों का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है. Please make sure that you fill up the right details in the right columns in the income tax return. If need be, I will again stress, please take professional advice if you are not sure about it. Second point, make sure that आपका जितना भी TDS कटा है उसकी क्रेडिट आपको मिल गई है. कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज ने आपका टीडीएस काटा होता है लेकिन उसकी क्रेडिट आपको रिटर्न फाइलिंग डेट तक नहीं मिलती है. सो वो उस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी तो वो टैक्स आपको आपके जेब से भरना पड़ेगा. आज की तारीख में ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि किसी ने आपका टीडीएस काटा लेकिन उसने नहीं भरा तो गवर्नमेंट उसके पीछे जाएगी. ऐसा आज की तारीख में ऐसे कोई सिस्टम नहीं है. अगर उसने नहीं भरा तो भी आपको आपके जेब से भरना है. आप फ्यूचर में उसको क्लेम कर सकते हो, वो दूसरी बात है, बट आप उस चीज का एक ध्यान रखिएगा. थर्ड पॉइंट, आप ये चेक कीजिएगा कि आपके जितने भी सेक्शन 80C के डिडक्शंस है, जितनी भी एग्जेम्प्ट इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम या मतलब अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिली है फैमिली या रिलेशन में तो वो एग्जेम्प्ट इनकम होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता, बट आपको वो चीज डिस्क्लोज करनी जरूरी है. एक एग्जेम्प्ट इनकम का एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल में जाके आपको जितनी भी एग्जेम्प्ट इनकम मिली है, जैसे कि कई लोगों की एग्रीकल्चरल इनकम होती है, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन डिस्क्लोज करनी चाहिए, वो जरूरी है. फोर्थ पॉइंट, आपको ये चीज पे ध्यान रखना है कि आपने जितने भी डिडक्शंस लिए हैं, सेक्शन 80C में 1.5 लाख का डिडक्शन हो गया, सेक्शन 80D में आपने मेडिक्लेम अगर आपने लिया है या हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है तो उसका आपको डिडक्शन मिलता है. वो भी एक कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी कैलकुलेशन है, क्योंकि उसमें भी 4 कैटेगरी आ जाती है. वेदर यू आर क्लेमिंग फॉर योर सेल्फ एंड फैमिली, और वेदर यू आर क्लेमिंग फॉर योर पेरेंट्स, वेदर यू आर अबव 60 एंड वेदर योर पेरेंट्स आर अबव 60. तो ये 4 कैटेगरी आ जाती है.
तो उस हिसाब से आपको प्रोग्रेसिव एक लिमिट आती है जिसमें मिनिमम लिमिट 25,000 की है, ज्यादा से ज्यादा 75,000 तक जाती है। तो आप वो एक चेक कीजिएगा कि आपने आपने आपका हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम का डिडक्शन लिया या नहीं। और एक छोटा सा डिडक्शन है जिसे कहते हैं सेक्शन 80 TTA, जो आपको सेविंग्स बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है उसका एक डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। कई लोग इस चीज को भूल जाते हैं क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट रहता है, उसमें एक लिमिट रहती है कि सिर्फ 10,000 रुपए तक का ही आप सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट डिडक्ट कर सकते हो। तो वो भी एक चीज का ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट एंड बट नॉट ऑलवेज द लीस्ट, फाइनली मैं आपको ये एक पॉइंट कहना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न में आप जो भी इंफॉर्मेशन भरते हो वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप किसी टैक्स प्रोफेशनल के पास भी जाते हो और वो गलती करे तो भी आप ही की जिम्मेदारी है, और अगर आप खुद भरते हो और खुद गलती करते हो तो भी आप ही की जिम्मेदारी है। सो चूज द वाइजर ऑप्शन ऑफ द टू। Thank you, Vivek. So thanks for that detailed answer on what one should ensure before filing the returns. So let me tell you here, we have Tax to Win. Tax to Win is a portal of ours where we have people coming and filing their tax returns. So we have different plans starting from do your own, do it yourself returns, along with obviously capital gains, ECA support, all of that. And since we are doing this discussion today, let me also announce we have a very exciting offer that we're going to announce today for all our viewers. All our viewers up till the 19th, if you go out and file your returns to Tax to Win, you get two benefits. The first benefit is if you do your own return, DIY return, it will be absolutely free. We are not charging you anything at all. Tax to Win is available on the Fisdom app. So all you have to do is go onto the Fisdom app and file your return, start your filing process. Also, if you go for any of the other plans where you need a CA support, we're providing a exclusive 35% off. So we're going to put it in the chat as well as on the comments. There is a code FIS35. If you put the code, you will get 35% off on any of the plans that you opt for. So here you are not only filing your returns on time, which we will help you with, you also have CA support, you also have tech support. So very interesting way of filing returns. And Vivek, with all the information you gave us, I think this should be enough for all our viewers to come out, file their returns, go onto the Fisdom app. So now, I would want to conclude saying Fisdom as a platform is, a wealth management platform providing you a suite of investment products, not only investment, now also tax filing solutions. So this is a go-to place for people not only to manage finances, make money, but also report your money made. Vivek, thank you for being a part of this show. I had an amazing time speaking to you. There are a lot of questions which we were asked. I couldn't take it because of lack of time, but I'm sure we will go out and talk to you again. Thank you so much, Vivek. Thanks for being a part of the show. We'll see you again. Sure. Thanks.